Good morning, students. Today, topic of discussion is derivative using direct methods. Up to now, we have studied differentiability at a point. Now, derivative using direct method. Derivative using direct methods. In this method, you have to learn a few formulas. The representation of derivative is d by dx. The first formula is x raised to power n. Formula is n into x raised to power n minus 1. You must understand this n is constant and any rational number. X is variable. So this is the first formula. Second, derivative of sin x, its derivative is cos x. Third, derivative of cos x is minus sin x. Derivative of tangent x will be secant square x, and derivative of cot x is minus cosecant square x. Derivative of secant x is secant x into tangent x. Derivative of cosecant x is minus cosecant x into cot x. Here x is variable, x is an angle and is in रेडियन. x एक एंगल होगा और वो एक रेडियंस में होगा. In this case, one important property you can learn: the trigonometric functions that start from c, mean cos, cot and cosecant, their derivatives are with minus signs. Rest of 3 are positive and 3 are negatives. So total these are 7 formula and 6 formulas for derivative of inverse trigonometric functions, means sin inverse x. In this case, this x is real number, this is not angle. That is 1 upon under root of 1 minus x square. This x is real number and variable. Formula number 9, derivative of cos inverse x minus under root of 1 minus x square. Derivative of tan inverse x 1 upon under root of 1 plus x square. Derivative of cot inverse x 1 upon under root of 1 plus x square with minus sign. Derivative of secant inverse x
1/x into under root of x square minus 1, derivative of cosecant inverse x minus 1/x into under root of x square minus 1. Total these are 13 formulas. In this case, formula number 14 is derivative of a raised to power x. This is a raised to power x into log of a base e. In this case, a is constant but x is variable, मतलब power is variables. Normally confusion is in formula number 1 and 14. In 1, x is the base and n is constant. In this case, a is constant and x is the variables. So these 14th formula, this is in your sheet number 7. Sheets are already delivered to you. Again there are written, I have written again it on the boards. So you may learn all these formulas. Next is properties of logarithm that have to be used in derivative as well as in integrations. Properties of log. First, the definition of log. If a raised to power x is equal to y, then log of y base a is x. This is the definition of log. Vice versa भी होता है. If log is given, you can change into exponents. Property number 1, log of 1 any base is always 0, because using definitions you know that a raised to power 0 is 1. Property number 2, log of a base a is 1, because you know that a raised to power 1 is a. From here this is clear, because if log y base a is equal to x, this can also be written as a raised to power x is equal to y. So that is the only reason first I have given you the definition of log. Third, e raised to power log of x base e is always x. E raised to power log x base e is equal to x, because you know that if you take log on both sides, then log x base e is equal to log x base e, because you can write here log of x base e is equal to log of x base e from first definition. If a raised to power x is equal to y, then log y base सेम नीचे आ जाएगा. Similarly log x base e नीचे आ जाएगा, is equal to power log x base e. So these are very important properties. Property number 4, log of a base b can be written as log of a divided by log of b. बेस आप कोई भी अपने हिसाब से कंफर्टेबली रख सकते हैं. ई एक एक्चुअली कांस्टेंट होता है जिसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं,
तो लॉग में हम ज़्यादातर यही डेफिनेशंस यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, log of m into n base a is equal to log of m base a plus log of n base a. Property number 6, log of base a m divided by n is equal to log of m base a minus log of n base a. Property number 7, log of m raised to power n base a can be written as n into log of m base a. पावर नीचे आ जाती है। So you have to study all these properties very carefully. We will use it in derivative as well as in integrations. Property number 1 से आप इनको कैरी कर सकते हैं और एंड तक ये प्रॉपर्टीज फर्स्ट इज योर डेफिनेशंस, सेकंड इज log of 1 base a 0, reason I have mentioned. Property number 2, log a base a is always 1. Property 3, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, log e रेज टू पावर log x बेस e. बार बार ना वीडियोस को पॉज करके देखना हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग इट. log ऑफ e रेज टू पावर log x बेस e इज इक्वल टू x. log a base b is equal to log a divided by log b. Property number 5, if there is a sign of multiplications, opening the log में प्लस आ जाता है, डिवाइड में माइनस और n में पावर नीचे आ जाती है. नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ log means d by dx of log of x base e. It is simply 1 by x because the base is e. But log of x base a, it has different derivative, because first you can write here log of x base e divided by log of a base e. This is base change property. Means I have given you, this is your property number 5, perhaps 4. This was property number 4. This is called base change properties. Now log a base e is constant taken outside, means derivative of log of x base e. So this becomes 1 by log of a base e into 1 by x. This is the derivative of log of x base a. You need the practice. Similarly, derivative of e raised to power x. Again, variable x is in power, you will write e raised to power x into log of e base e. And you know that log of e base e is 1. This is e raised to power x. Because this is your formula number 14, I have given you the derivative of a raised to power x. So derivative of
a raised to power x is a raised to power x into log of a base e. Next, sheet number 8, rules for differentiations. Few rules you have to follow before taking the derivatives. That is, rule number 1, derivative of constant is always 0. Derivative of k into u is k outside derivative of u by x. अब लिख सकते हैं कि let u, v and w be the function of x. k जो है वो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस v, रूल बड़ा सिंपल है. डेरिवेटिव ऑफ u, इफ इट इज प्लस साइन प्लस ले लेंगे, माइनस है तो माइनस ले लेंगे. सिमिलरली प्रोडक्ट रूल है u इंटू वी, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u. And last is your quotient rule, u upon v. This is first v square. You should write it on the same way but how I am writing it. First I am writing the square of the denominator, v square. Then v as it is derivative of u minus u as is derivative of v. This is quotient rule. And the last, that is very very important, is chain rule. Chain rule means derivative of a function of a functions. फंक्शन के फंक्शन जो अंदर दिया होता है उसका डेरिवेटिव लेना है, उसको आप चेन रूल्स कहते हैं. आज अगर हम प्रैक्टिस करेंगे वो चेन रूल की करेंगे. एक्चुअली जब आप चेन रूल्स करते हैं तो ये सारे रूल्स कई बार क्वेश्चंस में एक साथ अप्लाई होते हैं. फॉर एग्जांपल, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चंस. लेट मी कॉल दिस इज एफ एक्स. तो डेरिवेटिव्स मीन आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और f डैश x लिख सकते हैं हम, या d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स. एनी वन थिंग यू कैन रिप्रेजेंट इट. नाउ ऑब्जर्व दिस फंक्शंस वेरी केयरफुली. दिस वन, it is a composition of two functions. One is sine and another is x square plus 5. Composition of two functions. First, this may be called as angle and this may be called as functions. Mean x square plus 5 is your angle and sine x is your functions. What is the derivative of sine x? You say that the derivative of sine x is cos x, but x is your x square plus 5. Because x is a symbolical there, but in all the question x will change. X, you will take the same x which is given in the statement. The derivative of sine is cos x square plus 5 as it is. Chain rule say into
means product derivative of x square plus 5. Now this first terms remain as it is same, cos of x square plus 5, no change in this term as it is. Put your bracket x square, what is the derivative of x square? U plus v, ये वाला रूल अप्लाई होगा u plus v. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स आप फार्मूला ये यूज करेंगे x रेज टू पावर n वाला, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x and derivative of 5 is 0. So final answer, this 2x can be written first and into product cos x square plus 5. This is your final answer. So this is called the derivative of. Let me take one more questions. Question number 2. Let f of x is equal to cos of sin x, f dash x. Now in this case the angle is your sin x, angle is your sin x, and what is the derivative of cos x? You will say minus sin x. So you will put here minus sin cos sin. In place of this x you have sin x. By chain rule you will write here derivative of sin x. Means first you will take the derivative of functions, then you will take the derivative of angle. This is minus of sin minus sin x. Now the derivative of this is, the final answer is minus sin x, close the bracket, into cos x. So this is your final answer. Let me take one more questions. That is question number 3. Sine of ax plus b. First you may call it is fx, f dash x. What is the derivative of sine? First function is sine, another is this. The derivative of sine is cos, x will remain same, ax plus b into derivative of ax plus b. Now ax means, देखिए this x is your variable, this a is constant. You will use the property of k into u. So this is cos of ax plus b, close the bracket. The derivative of ax is a and derivative of b is 0. So final answer is a into cos of ax plus b. This is your answer. Let me take question number 4. This is fx is equal to secant tangent under root x. देखिए in these questions, if you take f dash x, what is the derivative of secant? Derivative of secant x. You will say secant x into tan x. And what is x? This whole is your x. So how we should write here? I will write here secant x means tangent root x into tangent means tangent root x.
into chain rule say what? Derivative of tangent root x. Now this term written as it is secant tangent root x, tangent root x, secant का डेरिवेटिव टेंजेंट का डेरिवेटिव secant स्क्वायर एंगल सेम रूट x, अगर डेरिवेटिव ऑफ रूट x, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं. दिस इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 1/2, 1/2 x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/2 x की पावर 1 माइनस. तो फाइनली हम इसको 1/2 रूट x लिखते हैं. तो फाइनल आंसर secant tangent of root x, tangent of root x into secant square root x into 1/2 root x. Every term should be enclosed in a bracket to avoid confusions, and this is your answer. Because we have taken three derivatives here, वो derivative of secant, derivative of tangent, derivative of root x. This process is known as chain rules. Next, question number 5. fx is equal to sine of ax plus b divided by cos of cx plus d. Now in this case the angles are different, so you can't write it here tangents. Tangent नहीं लिखा जाएगा. It means you have to apply quotient rules. U upon v. Quotient rule says you will write here cos square cx plus d. Cos of cx plus d as it is, derivative of sine of ax plus b minus sine of ax plus b as it is, derivative of cos of cx plus d. Last step, this is cos square cx plus d, cos cx plus d into cos ax plus b. आगे डेरिवेटिव ऑफ ax plus b इज a. मतलब आपको इनको अब छोटे स्टेप्स में भी लिखने की आदत डालनी पड़ेगी. माइनस साइन cx plus d into c. So this is your final answer. I have applied the quotient rules. आप इसको नोट कर सकते हैं, ये फाइनल है. फर्दर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, उसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है. वन मोर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 6. cos of x cube into sine square x raised to power 5
लास्ट क्वेश्चंस बाकी कल करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। एफ डैश एक्स कॉस एक्स क्यूब एंड प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी भी लगेंगे और ये भी लगेगा, तो मीन फर्स्ट स्टेप कॉस एक्स क्यूब एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब। पहला ये पॉइंट आप नोट करिए। अगला पॉइंट्स देखिए, यहां पे हम इसका डेरिवेटिव रफ में लेते हैं, इसको जी एक्स लेट कर लेते हैं। देखिए दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5, दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैज ए पावर दैट इज 2। मीन पावर यहाँ लिखूँ मैं यहाँ लिखूँ एक ही बात होती है, बिकॉज आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 है, इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स रेज टू पावर 5 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप इज डेरिवेटिव ऑफ पावर। सबसे पहला जो स्टेप डेरिवेटिव का होता है पावर का लेते हैं, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। पावर मेरा मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, जो फार्मूला होता है एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, ये मेरा मतलब पावर से है। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 5 की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अब पावर का डेरिवेटिव ले लिया तो अगला डेरिवेटिव साइन का, इट मीन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर 5। नेक्स्ट स्टेप 2 साइन एक्स रेज टू पावर 5, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस एक्स रेज टू पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। चेन रूल्स लगाते चले जाइए। फंक्शन को यहाँ देखिए, 2 का ले लिया आपने, साइन का ले लिया, अब किसका रह गया, एक्स रेज टू पावर 5 का। तो 2 इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 5 cos x raised to power 5 into 5 into x raised to power 4. So this is the derivative of first term that I have taken. Now the derivative of cos x cube, इसको मैं नया फंक्शन एक h of x ले लेता हूँ, cos of x cube, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x cube into डेरिवेटिव ऑफ x cube। तो फाइनल आंसर इज माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x के। और फाइनल आंसर यहाँ लिख दीजिए। वैसे साइड में करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये तो आप पहली बार डेरिवेटिव्स कर रहे हैं इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। और रैदर दैन एग्जामिनेशन में डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, नहीं तो आप लोगों को इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। इंटीग्रेशंस मुश्किल नहीं होती, बच्चा डेरिवेटिव की प्रैक्टिस अगर जो कम कर दे तो इंटीग्रेशन टफ हो जाती है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आप मैंने एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 6 सम कराए हैं, 9 और 10 सम मैंने ऑलरेडी आपको करा रखे हैं, 7, 8 2 सम्स हो रहे हैं जो आप अपने होमवर्क में कर लेंगे। तो आज आप एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करिए। जो भी डाउट्स हैं आप मुझे जूम क्लास में 4 बजे अटेंड करेंगे।